Sir, now you can start, sir. गुड इवनिंग टू ऑल इन्वेस्टर्स। मैं कल्पेश जोटानिया आप सभी का डिजिटल सैटरडे स्कूल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का अपना विषय है मैजिक ऑफ एसआईपी। हम सभी ने अपने लाइफ में मैजिक शो बहुत देखे रहेंगे, पर आज हम आपको एसआईपी का मैजिक दिखाने जा रहे हैं। तो एसआईपी का मैजिक आज अपने साथ एनजे इंडिया इन्वेस्ट के सीनियर डीजीएम हिमांशु मेहता, जिनका म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 20 साल का अनुभव है। तो मैं हिमांशु सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि किस तरीके से एसआईपी का मैजिक है और अपने इन्वेस्टर्स के जितने भी डाउट्स है वो क्लियर करें। तो मैं हिमांशु सर से रिक्वेस्ट करता हूं, सर मैजिक मैजिक ऑफ एसआईपी का शो कंटिन्यू करें। Thank you, Kalpesh, and thanks for your nice introduction. आज जैसे कल्पेश ने बताया कि our objective is to give you an insight about the 8 wonder of the world, that is power of compounding and power of compounding through SIP. तो आज का अपना जो टॉपिक है that is on magic of SIP. तो let me start the agenda of the day. Just give me a minute. I will share my presentation. Yeah, hopefully my presentation is visible. Kalpesh, is my presentation visible now? Yes, sir, it's visible, sir. Okay, thanks a lot. Thank you very much. जो जैसे एजेंडा है कि मैजिक ऑफ एसआईपी, तो पहले हम मैजिक ही देखते हैं कि एसआईपी में कितना मैजिक क्रिएट किया है, और ये भी समझते हैं कि हाउ पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स और कितना वेल्थ बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं एक सिंपल लाइव एग्जांपल से कि एक फंड चालू हुआ था, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो चालू हुआ था वो चालू हुआ था नवंबर 2006 में, सॉरी 1996 में। फ्रॉम 1996 में किसी ने अगर महीने की 10,000 रुपए की एसआईपी चालू की थी, तो अभी तक, ओके, दिस लाइव एग्जांपल जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैंने दिसंबर 2020 तक रखा हुआ है कि दिसंबर 2020 तक उसका टोटल इन्वेस्टमेंट 30,30,000 हुआ था। दैट वाज 303 मंथ्स टिल दैट डेट, एंड उसकी वैल्यू वाज नियरली 9 करोड़ ऑफ रुपीज, विच वाज रफली 22% पर एनम। अब इसका ही अगर हम लोग लाइव एग्जांपल अभी का तक का देखें कि यही फंड ने, जो मैंने बताया था कि अक्टूबर 1995 से चालू हुआ था, 95 से अभी तक इसकी एसआईपी आपने कंटिन्यू रखी है, ठीक है। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 31,60,000 रुपया हुआ, दैट इज 31,60,000 रुपीज टोटल इन्वेस्टमेंट विद जस्ट अ स्मॉल savings every month of 10,000 rupees, and the current value is more than 12 crores, which is a phenomenal return of 22% per annum. So this is what the magic of SIP and the power of compounding has been created over a period of roughly around 25-26 years of your small savings through SIP. सेम वे और 2-3 लाइव एग्जांपल्स देखते हैं। अगर आप ये देखो कि मैंने वो सारे फंड्स ले लिए जिनके रफली 25 साल कंप्लीट हुए हैं, तो अगर आप 25 साल के सारे फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखो, तो ये जो रफली अराउंड 10 स्कीम्स है, ये 10 स्कीम्स की आप यहाँ पे एवरेज परफॉर्मेंस में देखिए कि एवरेज परफॉर्मेंस में लास्ट 25 इयर्स का रिटर्न इज रफली 18% पर एनम। तो आप उसका अगर वैल्यू टर्म्स में देखो लास्ट 25 साल में कि टोटल सेविंग्स 30 लाख रुपया हुआ। अगेन मैंने सिंपल एग्जांपल लिया है 10,000 रुपया पर मंथ, तो योर टोटल सेविंग्स इज 30 लाख रुपीज। मैक्सिमम जैसे मैंने बताया अबाउट निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, द वैल्यू इज मोर देन 12 करोड़। एवरेज में इट्स विच इज रफली अराउंड 18% per annum, the value is roughly around 3 crore 66 lakh rupees, and the worst return, या आप ये बोल सकते हो the lowest possible return is 1 crore 51 lakh rupees। जो आपके ये सारे फंड्स में नीचे का जो सबसे लोएस्ट स्कीम है वो आप देख सकते हो, जेएम लार्ज कैप फंड। जेएम लार्ज कैप फंड का लास्ट 25 साल का
historical return is roughly 10.82% per annum. लास्ट 20 साल का सेम वे अगर आप देखो तो लोएस्ट पॉसिबल रिटर्न इज रफली 10.98% एंड लास्ट 15 years the return is 9.39%, which shows के सबसे लोएस्ट पॉसिबल रिटर्न्स इज मच बेटर देन द ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट. कि आज ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट आप कोई भी अगर आपका इन्वेस्टमेंट का ऑल्टरनेट देखो, यू माइट go for bank FD, you might go for recurring account, you might go for PPF kind of a thing. तो any traditional investment का सबसे lowest possible जो म्यूचुअल फंड्स के स्कीम का रिटर्न है is outperforming them by almost 2 to 3% per annum. So it is from 9.5% to 11% per annum. And अगर आप एवरेज में देखो, and you should always focus on average, तो all this 10 schemes जिन्होंने 25 साल कंप्लीट हुए हैं, their return is from 14% to 17% per annum. So that is a phenomenal amount of magic which has been created through SIP performance. अब इसका अगर आप सिंपल टर्म्स में ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग कितना बड़ा वर्क कर सकता है, वो एक लाइव अंडरस्टैंडिंग या एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से देखते हैं कि आज की तारीख में एक पोस्ट ग्रेजुएट जब अपना कैरियर चालू करता है at the age of 25, so he might start his monthly salary of 25,000 rupees per month. जैसे जैसे उसको प्रमोशन मिलना चालू होता है, एक्सपीरियंस बढ़ना चालू होता है, उसकी इनकम बढ़ना चालू हो जाती है, तो एज ऑफ 35 तक वो रफली 75,000 से लेके 1 लाख रुपीस पर मंथ पर पहुंचेगा. 45 तक आते आते उसका 1.25 लाख रुपया 1,25,000 रुपीस पर मंथ हो जाएगा. एंड व्हेन ही रिटायर्ड, probably his income will be 4 lakh rupees, 4 lakh rupees per month at the age of his retirement. So वो अपने कैरियर में रफली 35 years सैलरी कमाता है. तो अगर मैं ये लाइव एग्जांपल से ऐसा पकड़ लूं कि उसकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपीस पर मंथ हो गई, ओके, क्योंकि उन्होंने 25,000 रुपए पे कैरियर चालू किया था, रिटायर हुआ तब तक 4 लाख रुपया हो गया, तो उसका एवरेज सैलरी 1 लाख रुपया पर मंथ हो गई. तो ये 35 साल में उसने अपनी टोटल सैलरी से रफली 4 करोड़ 20 लाख रुपीस कमाया है. आई रिपीट, उसने रफली 4 करोड़ 20 लाख रुपीस अपनी टोटल लाइफ ऑफ दिस 35 इयर्स में उसने 4 करोड़ रुपया से ज्यादा थोड़ा पैसा कमाया हुआ है. एंड अगर एक सिंपल फॉर्मूला अगर आप यूटिलाइज करो अबाउट योर इन्वेस्टमेंट, कि आपकी जो भी सैलरी है उसका हमेशा 10% आप एसआईपी करो. ओके, व्हेन यू स्टार्टेड योर कैरियर एट द एज ऑफ 25 एट 25,000 रुपीज, आपने 10,000 रुपए की 10% सैलरी स्टार्ट की, तो आपने 2,500 रुपया की एसआईपी चालू की. जब आप यू हैव रीच इनकम ऑफ 4 लाख रुपीज एट द एज ऑफ रिटायर, तो आपने 10% मतलब रफली 40,000 रुपीज की एसआईपी चालू की, तो आपकी एवरेज सैलरी जो मैंने 1 लाख रुपीज पकड़ा था उसका ही 10% विच इज 10,000 रुपीज पर मंथ की आपकी एसआईपी हो गई. तो आप ये देखिए कि 10,000 रुपीज पर मंथ एसआईपी फॉर दिस पीरियड ऑफ 35 इयर्स ऑफ योर कैरियर, द सेम 35 इयर्स ऑफ योर सेविंग्स मैंने डाल दी है एट 15%. मैंने बताया था कि एवरेज रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड हम लोग ने पकड़े थे कि एवरेज रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड हम लोग देखे थे कि फ्रॉम 13% टू 17.5% रिटर्न बने फ्रॉम 15, 20, 25 इयर्स. वही मैंने एवरेज रिटर्न 15% मैंने पकड़ ली है. तो 15% के हिसाब से इट बिकम्स रफली 11.5 करोड़ रुपीज, 11 करोड़ 41 लाख रुपीज. तो आपने अपनी पूरी कैरियर में अपनी सैलरी से 4 करोड़ 20 लाख रुपीज इनकम की, और बाय सेविंग एट द राइट प्लेस एंड विच इज जस्ट 10% ऑफ द सैलरी, यू आर मेकिंग roughly 11 crore 40 lakh rupees. And it is much simpler to save 10% of your salary. The average Indians roughly save 27% of their total salary. And this example shows just 10% of your salary at the right place. So it's a phenomenal amount of wealth which has been created in SIP. तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग से होता है. ओके, कि 10,000 रुपीज पर मंथ से आप एसआईपी चालू करो. नाउ कमिंग ऑन टू दिस, कि व्हाई एसआईपी हैज बीन क्रिएटेड सच वेल्थ.
हाउ एसआईपीज, तो अभी जो हम फ्लो देखेंगे, हम आगे का जो डिस्कशन करेंगे, we'll try to understand कि how SIPs have been able to create such kind of a wealth over a period of time. तो सबसे पहले जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले जो समझना चाहिए वो समझना चाहिए रियल रेट ऑफ रिटर्न, RRR. नाउ रियल रेट ऑफ रिटर्न में व्हेन यू कंपेयर ऑल योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, तो आपके जो टू बिग एनिमीज है, ओके, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स के दो बड़े एनिमीज होते हैं, और वो दो बड़े एनिमीज है टैक्स एंड इन्फ्लेशन. तो अगर आप टैक्स और इन्फ्लेशन को निकाल दो तो आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न मिलता है. तो आप इन शॉर्ट ये फॉर्मूला में अगर आप सिंपल तरीके से देखो कि आप देखो कि योर रिटर्न्स, या आप बोल सकते हो रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट माइनस टैक्स, तो आप माइनस टैक्स करोगे तो आफ्टर टैक्स रिटर्न मिलेगा, माइनस इन्फ्लेशन, यू विल गेट रियल रेट ऑफ रिटर्न. तो यहाँ पे मैंने दो कंपैरिजन बताया हुआ है. एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट का कंपैरिजन बताया हुआ है, लाइक योर बैंक एफडी एंड अदर रिकरिंग अकाउंट और रिकरिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट ट्रेडिशनल ऑप्शन along with the म्यूचुअल फंड रिटर्न्स. तो आप देखो कि आज की तारीख में ऑन एवरेज ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में आपको 6% पोस्ट टैक्स रिटर्न मिलता है, सॉरी प्री टैक्स रिटर्न मिलता है. आप उसमें से टैक्स निकाल दो तो मैंने यहाँ पे 20% टैक्स ब्रैकेट पकड़ा है. You might be at 30% tax bracket, you can be at 10% tax bracket or 0% tax bracket. Just for understanding point of view, I have taken a 20% tax bracket in this example. So of one, when you are earning, you are paying tax of 20% on 6%, so you will have to pay a tax of 1.2%. तो आफ्टर टैक्स रिटर्न 4.8 हो गया. इन्फ्लेशन, ओके, मैंने बहुत ही अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आज 5% इन्फ्लेशन पकड़ा है, जो लास्ट 2-3 साल से एवरेज इन्फ्लेशन ऑफ द कंट्री है. तो 5% भी अगर आप इन्फ्लेशन पकड़ लो तो योर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में आपको -0.20 रिटर्न मिल रहा है. तो इन शॉर्ट योर रियल रिटर्न ऑन योर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इज इन नेगेटिव. यहाँ पे इन्फ्लेशन मैंने सिर्फ 5% पकड़ा हुआ है. हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन कितना बड़ा आज की तारीख में कितना बड़ा रोल आपके इन्वेस्टमेंट में प्ले करता है, आगे हम देखेंगे. सेम वे अगर आप जब म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स कंपेयर करो तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स हमने देखे कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम 15% पर एनम रिटर्न मिलता है. टैक्स ऑन रिटर्न्स इज 10%. देखो म्यूचुअल फंड का जो इक्विटी का टैक्सेशन होता है, दैट इज ये होता है कि first 1 lakh rupees of capital gains is tax free on the year of redemption. I repeat, first 1 lakh rupees of capital gain is tax free on your redemption in the year of your redemption, and remaining is tax at 10%. तो मैंने जस्ट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 10% टैक्स पकड़ा है. तो 15% का 10% आप टैक्स भरो तो 1.5% आपने म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स के ऊपर टैक्स भरा. तो योर आफ्टर टैक्स रिटर्न इज 13.5 माइनस द इन्फ्लेशन ऑफ 5%, योर रियल रिटर्न इज 8.5%. सो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में आपका ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न्स क्रिएट कर रहे हो, एंड म्यूचुअल फंड्स में एंड एसआईपीज में आप रफली 8.5% पर एनम रियल रिटर्न कमा रहे हो. एंड बिकॉज ऑफ दिस यू आर मेकिंग a handsome wealth over a period of time. जैसे मैंने बताया था इन्फ्लेशन के बारे में हमने बात की थी. तो इन्फ्लेशन इज अ साइलेंट किलर. इट इज ईटिंग अवे योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अब इन्फ्लेशन में नॉर्मली दो कंपोनेंट होता है, एक नॉर्मल इन्फ्लेशन है और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन्फ्लेशन है. अभी नॉर्मल इन्फ्लेशन क्या है कि नॉर्मल इन्फ्लेशन इज लाइक अ इन्फ्लेशन ऑफ एक सिंपल प्रोडक्ट की बात कर लो या एक यूसेज कॉमोडिटी की बात कर लो. जैसे पेट्रोल all of us consume petrol for transportation, for many other purpose, okay, and there is a huge amount of inflation over a period of time in petrol. तो आप इन्फ्लेशन अगर जब नॉर्मल इन्फ्लेशन देखो तो 5-6% का प्राइस इंक्रीज हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो remaining inflation is a standard of living inflation.
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक कॉस्ट के साथ आता है, एंड इट इज अ वेरी बिग कॉस्ट अटैच टू अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. Let's take an example. My father, when he used to travel, he normally used to travel in a train which was an express train. Suppose he wants to go from Bombay to Delhi, you need to he used to opt for train, and normally he was opting for a sleeper class. तो आज का इन्फ्लेशन उनके लिए वो नॉर्मल इन्फ्लेशन 5% होगा अगर मेरे फादर वही स्लीपर क्लास में जाएंगे तो. मगर बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, me and my father currently are opting for flights. We are not opting for sleeper class, we are opting for flight. तो जैसे ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपकी बढ़ी, आपका बहुत बड़ा इन्फ्लेशन अटैच्ड हो गया. सो आप ये बोल सकते हो कि मुंबई टू दिल्ली अगर आप स्लीपर क्लास में जा रहे हो तो आपको रफली 500-600 रुपीज की टिकट आएगी आज की तारीख में. मगर आप एयर टिकट बुक करोगे तो रफली 2500 to 3500 रुपीज पर ट्रैवल आपको टिकट मिलेगी. सो योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज कमिंग विद अ वेरी हाई कॉस्ट, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर आर वेरी फ्यू इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है. एंड दैट्स व्हाई combining these two combination of normal inflation and standard of living inflation, you have to find an options of investment जिसमें real rate of return, जैसे हम लोग ने म्यूचुअल फंड के real rate of return देखे, which is giving roughly 8.5% higher return than inflation, वैसे प्रोडक्ट आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे to help you reach your financial goals. अदरवाइज आप अपने फाइनेंशियल गोल्स में पहुंच नहीं पाओगे. नाउ एसआईपी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज अ रूपी कॉस्ट एवरेजिंग. लेट अंडरस्टैंड कि ये रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कैसे काम करता है व्हेन वी डू एसआईपी. देखो, एसआईपी अगर हम लोग लेमन टर्म्स में बात करें तो व्हाट इज एसआईपी? आप लेमन टर्म्स में एसआईपी को बोल सकते हो कि इट इज लाइक एन रिकरिंग अकाउंट इन अ म्यूचुअल फंड. जैसे आप बैंक अकाउंट में रिकरिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, पोस्टल सेविंग्स में आप रिकरिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, वैसे म्यूचुअल फंड में आप रिकरिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो. तो एसआईपी इज इन अ नॉर्मल टर्म या इन अ लेमन लैंग्वेज हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट्स अ रिकरिंग अकाउंट इन अ म्यूचुअल फंड, एंड इट हेल्प्स टू क्रिएट रूपी कॉस्ट एवरेजिंग and create a wealth in an SIP. तो ये कैसे काम करता है? तो एक लाइव एग्जांपल पकड़ते हैं. ओके, कि मैंने एक सेक्टोरियल फंड की SIP पकड़ी. ठीक है, टू गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, लेट मी ओपन द एक्सेल शीट फॉर द सेम. एक मिनट दीजिएगा. I will open my Excel sheet for the same to give you a better view on this one. तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो फंड है, ये प्रूडेंशियल आईसीआईसी टेक्नोलॉजी फंड करके एक सेक्टोरियल फंड था. दिस वाज एन सेक्टोरियल फंड व्हिच वाज स्टार्टेड इन 2000, इन द ईयर 2000. ओके, इन द ईयर 2000 देयर वाज एन आईटी बबल. ये फंड तभी आया, तब इसकी एनएवी 10 रुपया थी. आफ्टर दैट देयर वाज अ blast of IT bubble. It was a period when Ketan Parekh scam broke in India. And IT bubble जो बना हुआ था वो फट गया, and the NAV start to fall. तो आप देखो कि आपने 2000 रुपए की SIP जब चालू की, 10 रुपए की NAV, slowly and steadily the NAV started falling. In next 20 months, I repeat, in next 20 months, okay, the NAV came to roughly around 2 rupees 19 पैसा. तो 10 की NAV 2 हो गई in just 20 months. अभी इसका एडवांटेज कैसे हो रहा है? जैसे मैंने बताया था कि SIP में आपका एवरेजिंग हो रहा है. तो एवरेजिंग कैसे होता है? तो इट इज एन बाय अ सिंपल प्रोसेस कि जब कोई चीज महंगी होती है तो हम कम खरीदते हैं, जब कोई चीज सस्ती होती है तो हम ज्यादा खरीदते हैं. लेट्स टेक एन लाइव एग्जांपल के अगर लेट अज्यूम के
if you are consuming tomatoes at your home, तो अगर आप tomatoes 100 rupees per kg हो जाएंगे, तो probably you will consume just 1 kg instead of 2 or 3 kg in a week at your family. फिर वापस जब टमेटो का प्राइस थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, 40-50 रुपीस के आसपास आ जाएंगे, तो यू विल हैव अ नॉर्मल कंजम्पशन ऑफ योर 2-3 kgs पर वीक. वेब से आप चालू करते हो, तो इट्स अ नॉर्मल वे कि जब चीज महंगी होती है तो हमको कम खरीदनी चाहिए, जब जब चीज सस्ती होती है तो हमें ज्यादा खरीदनी चाहिए. तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट पे काम चल रहा है कि यहाँ पे आप देखें कि जब इसकी एनएवी 10 रुपया थी, तो वही 2000 रुपए से आपको 200 यूनिट्स मिले. कैसे जैसे जैसे एनएवी करेक्ट होना चालू हो गई, ओके, यू हैव स्टार्टेड रिसीविंग मोर नंबर ऑफ यूनिट्स. ओके, यहाँ पे आप देखो कि व्हेन द एनएवी वाज रफली 5 रुपीस, ओके, 4 रुपीस 84 पैसा, ठीक है, तो वही 2000 रुपीस से you have received 400 units in that month. Same way when the NAV was 2 rupees, तो वही 2000 rupees से you are getting roughly 900 units. So you have started accumulating more units when the market has a correction. And that's a phenomenal, beautiful part of SIP. Now, हम ये टाइम नहीं कर सकते, but by default, जब आप SIP कर रहे हो, हर महीने आपका सेविंग्स हो रहा है, हर महीने आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस, ये सिस्टम आपका एवरेजिंग कर रहा है. अब अगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू पैनिक एंड इफ यू हैव रिडीम योर मनी, तो आप देखो कि आपने अपना पैसा हमेशा कम अमाउंट पे रिडीम किया है. तो आपने देखो यहाँ पे कि when the after the 20 months your total savings was 40,000 rupees, so 2,000 rupees a month for 20 months, so your total amount of investment till date was 40,000 rupees. On that period your value of your investment was nearly 20,000 rupees, so it was around 50% down. NAV was down by almost 80% and the value was down by almost 50%. So if you panic and if you withdraw your money, you can withdraw at negative amount. But as an SIP investor, जो पहला thumb rule है, वो पहला thumb rule ये है कि you have to invest with a minimum horizon of 5 years. I repeat, you need to invest with a minimum investment horizon of 5 years. तो आप ये देखो कि आपने क्या करना चालू किया. मैंने जैसे बताया, you have started accumulating more units when the NAV was falling, when the NAV was correcting. And what was your role as an investor? Your role of an investor was to have patience and complete minimum of your 5 years. तो आपने minimum 5 साल complete किए, okay? तो 5 साल के बाद आप देखो कि what is the magic which has been created by staying patient during your SIP journey. So after completion of 5 years in 2005, so you started in 2005, the NAV was 7 rupees. So 10 रुपए की NAV, 2 की NAV 7. So 10 rupees NAV have never been a 10 rupees again in this period of 5 years. So the 5 years period, the NAV journey was from 10 to 2, 2 to 7. But at the end of the 5 years, the magic has been that you have accumulated roughly 31,155 units. आपने total units कितने accumulate किए? 31,155 units. And what was the value at that point of time? So your value was 2,12,000 rupees with a return of 22% per annum. And your average cost per unit is 4 rupees. तो आपने देखा कि 10 की NAV 2 की NAV 7, until you have made a return of 22% per annum, and your 1,22,000 rupees savings value was 2,12,000 rupees with an average cost of 4 rupees per unit. So SIP investor
तो हमेशा ये प्रे करता है कि प्लीज मार्केट को करेक्ट करो, प्लीज मार्केट को करेक्ट करो, बिकॉज व्हेन मार्केट करेक्ट you accumulate more number of units. The power of SIP can be realized when you accumulate more number of units, and this is the simple magic what we are creating in SIP, right? Coming back onto the presentation. So this is how you have created returns when NAV has been correcting, and with a patience of 5 years you have made a return of 22% per annum. So this was the entire thing which I have explained to you, okay, with that Excel sheet. Now SIP journey will be volatile. ये आपने देखा कि SIP journey for a longer period of time has created a phenomenal amount of wealth. हमने देखा कि निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड का एग्जांपल देखा कि total investment of 31 lakh rupees is more than 12 crore rupees today. So over a period of this 26 years, we have feel that the amount of wealth which has been created. But this amount of wealth which has been created over a period of time, the only thing which we need to understand in this journey is this journey will be volatile. और ये volatile journey में as a investor आपका रोल क्या है? ये volatile journey में आपका रोल यही है कि हमें मिनिमम 5 साल सोच के इन्वेस्ट करना है, एंड मैक्सिमम एज लॉन्ग एज पॉसिबल. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि इफ आई हैव अ डॉटर whose age is 10 years old. As a parent, my first financial and important goal is my daughter's education, and for higher education India has been very costly. तो आई नो कि मुझे मेरी डॉटर का हायर एजुकेशन की नीड जब वो 20 साल की होगी, जब वो 20 ईयर की होगी, तब जरूरत पड़ेगी. तो हर एज इज करंटली 10 years old. I required money when she will be at 20, so I required money after 10 years. So if I required a money after a 10 years, and in between if the SIP journey is volatile, why I need to react on that volatility? I don't have to react on that volatility. So what you need to understand? तो आपको ये समझना है कि एक लाइव एग्जांपल वापस मैं आपको एक फंड के साथ बताता हूं. There is one fund, Aditya Birla Flexi Cap Fund. You started an SIP of 10,000 rupees in the year 1999. The first year your total savings was 1,20,000. The value was nominal at 1,25,000. To be precise, 1,24,340 rupees. Your return was just 8% on the first year. On the second year, as I informed that in the year 2000 there was an IT bubble, that there was a crash, market was volatile. The next year your returns become minus 32%. So 2,40,000 rupees after the completion of 2 years, the value was 1,68,000 and your return was minus 32%. तो आपने नेगेटिव रिटर्न कमाया. इवन आफ्टर द थर्ड ईयर, जैसे हम लोग ने वो सेक्टोरियल फंड की एसआईपी का देखा था कि देयर आर नेगेटिव रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यहां पे भी आपने नेगेटिव रिटर्न्स देखा कि 3 साल के बाद योर रिटर्न इज माइनस 9% इन योर एसआईपी. बट ऑन द कंप्लीशन ऑफ द 5th ईयर आपका टोटल सेविंग 6 लाख रुपीस हो गया. 6 लाख रुपीस की वैल्यू 11.5 lakh rupees है. To be precise, 11,28,112, which a return of 25% per annum. And जैसे जैसे आपकी जर्नी बढ़ती गई, your wealth has started creating. At the end of the 10th year, your 12 lakh rupees value is 51 lakh rupees with a phenomenal return of 27%. At the end of 20th year, with your investment of 24 lakh rupees, your value is 1 crore 82 lakh rupees and a return of 17% per annum. सेम वे आप देखो कि अगर आपने एसआईपी जनवरी 2006 में चालू की तो फर्स्ट 2 years you have made a phenomenal amount of return, but
what is your role as an investor? Your role of an investor is to complete minimum 5 years. तो आप यहाँ देखो कि first year you have invested 1,20,000 rupees. The value was 1,47,000 rupees, a return of 48%. Now as I informed that my daughter is 10 years old and I required money after 10 years. So should I remove money after 1 year? Probably no. Why should I remove my money? Because the 1,20,000 rupees is 1,47,000. Though the return is 48%, it is not fulfill my target. Because my target is to create a corpus for my daughter's education, which I required after 10 years. So I should continue. I have to continue that period of investment. तो 1 ईयर के बाद आपका 1,50,000 के आसपास पैसा है. 2 साल के बाद आपका 2,40,000 rupees is roughly around 4,29,000, a return of 69% in that period. And again in the year third year, which you might remember, was 2008. There was a subprime crisis in America. Indian market also corrected, and the value of SIP was in negative of 17%. From the return of 69% on the third year, it became a negative return of 17%. No need to panic about it. You just have to complete your journey. तो आपके 5 साल जब खत्म हुए तो आप देखिए कि your SIP has helped you to create a wealth. Why? क्योंकि जब मार्केट करेक्ट होता है आप ज्यादा यूनिट खरीद रहे हो. तो 5 साल के बाद 6 लाख रुपीस की वैल्यू is 9,22,000 rupees with a return of 17% per annum. Coming on the 10th year, जैसे मैंने बताया, I have started an SIP for my daughter's education. 12th year, the 12 lakh rupees value is now 25 lakh rupees with a return of 14% per annum. On the completion of 15th year, again the return is 14% per annum near to, and the value of 18 lakh rupees is 54 lakh rupees. So your role as an investor is to complete minimum 5 years, and in this 5 years the journey will be volatile. 2 years, 3 years, there can be a probability of negative return. No need to complete, no need to worry about it. As an investor, we need to complete minimum 5 years. Same way, you started your SIP in 2010. After 2 years, your return was negative of minus 20%. And on completion of 5th year, your 6 lakh rupees investment is more than 10 lakh rupees of return of 22% per annum. On the 10th year again, your return of 12 lakh rupees is near to 25 lakh rupees with a return of 14% per annum. So this SIP journey will be volatile. No need to panic about it. You need to complete minimum 5 years. Now, there are the reasons why people feel that they expect market to be high. They expect that market might correct from now. Okay, जैसे अभी there is a reason that there is a volatility because of Russia and Ukraine war. So I feel that I want to stop my SIP as I expect that market will correct. अगर ये आप करोगे तो वापस मैं वही सिंपल एग्जांपल्स के सामने ये बताऊंगा कि probably you might make a negative return for 2 to 3 years. बट यही टाइम पे आपको सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है? यू आर एक्यूमुलेटिंग मोर यूनिट्स, एंड व्हेन यू आर एक्यूमुलेटिंग मोर यूनिट्स यू नीड टू प्रे टू गॉड कि मार्केट को करेक्ट होने दो, बिकॉज आई एम एक्यूमुलेटिंग मोर नंबर ऑफ यूनिट्स. एंड जब मैं ज्यादा यूनिट एक्यूमुलेट कर रहा हूं, अगेन कमिंग ऑन बैक ऑन टू दैट एक्सेल शीट, जस्ट गिव मी अ टाइम, या कमिंग ऑन बैक ऑन टू दिस एक्सेल शीट, कि जब मार्केट करेक्ट होता है, एंड दैट कैन बी एन एनी रीजन, ओके, आई डोंट वांट टू फॉलो इन द रीजंस व्हाई मार्केट करेक्ट, बट व्हेन द मार्केट करेक्ट आई एम बाइंग मोर यूनिट्स, एंड दैट इज द पावर ऑफ रूपी कॉस्ट एवरेजिंग. ओके, एक लॉन्ग टर्म रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का एग्जांपल भी मैं बता देता हूं आपको, कि आप जब ये देखो कि निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड का जो हमने एग्जांपल पकड़ा था
कि निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में over a period of 25 years, let's come on to the period of 25 years, आपने 10,000 कर करके आपने 30 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया है. The current value of this is more than 9 crore plus your return of 22%. Your rupee cost averaging unit, yeah, because of rupee cost averaging, you are getting unit at 62 rupees, and the NAV currently is more than 2,000. I repeat, the NAV currently is more than 2,000, and you are getting units at 62 rupees. So आप percentage terms में देखोगे तो it is huge difference because of this rupee cost averaging. Okay, same way जब आप फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड का एग्जांपल देखो तो फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड की करंट NAV is near to 1,500 rupees. But what you are getting right now, because of this averaging, your cost per unit is just 53 rupees. I repeat, your cost per unit is just 53 rupees. So if you try to time the market, you cannot do it. But by SIPs, automatically you are buying more units when the market is correcting, and you need to pray to God, okay, it's great time that market correct and I accumulate more number of units. So falling market are good for SIP investor. It helps you to accumulate more units. SIP investment are for long term. If the goals are 15 years away, short term volatility does not matter. What matter is consistency. So that is the all idea about the SIP investor. तो ये सारी चीज मैंने ऑलरेडी एक्सेल शीट थ्रू आपको बता दी है. एक बहुत काफी टाइम जब ये वेल्थ क्रिएशन जर्नी में हम बात करते हैं कि आई वांट टू स्टॉप एसआईपी बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सेव. द सेविंग is an habit which you need to cultivate, and saving habit can be only cultivate if you prepare cash flows and budget. आपको बहुत सिंपल तरीके से अपने बजट, मंथली बजट एंड कैश फ्लो डिटरमाइन करना पड़ेगा. इफ यू स्टार्ट डिटरमाइनिंग योर कैश फ्लो एंड बजट, probably this reason won't come in your life. जो हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था, I will come back to on that example. Okay, what a simple formula will help you to create wealth. The simple formula is saving 10% of your total savings per month, या 10% of your total income per month in SIP. If you start doing 10% of your total savings, monthly income, family income, जो भी आप पकड़ो, you create phenomenal amount of wealth. You create almost 3 times of your money जो आप अपने बिजनेस से या अपनी जॉब से कमाने वाले हो. तो यहाँ पे हमने लाइव एग्जांपल देखा था. सो द सिंपल फॉर्मूला इज you need to save minimum 10% of your total income. Now, what is saving? Saving is just, it's a pain of not having your short term wants. देखो, अगर हमें शॉर्ट टर्म वॉन्ट्स की बात करें कि आई वांट टू अपग्रेड माई सेल्फ फ्रॉम iPhone 10 to iPhone 13, it's a short-term pain. Okay, I do not need to migrate for some time, for next 2 to 3 years. Probably if my mobile is in a good working condition, I not need to upgrade myself to iPhone 13. And this is just a small pain in a short term. But by taking this pain, you will able to fulfill your long-term financial needs. तो बाकी सब चीजें हम लोग ने आगे देखी है. काफी जन को ये लगता है कि if my income reduced by 20%, I need to cut my SIP by 20%.
if my income falls by 20%, I need to cut my SIP by 20%. This is again a very big myth. What you need not need to follow it. अगर आप 20% आपकी सैलरी कट हो रही है तो आपको 20% SIP कट डाउन नहीं करनी है. सबसे पहले आपको अपने एक्सपेंस 35 to 40% से कट करने की कोशिश करनी चाहिए. If your income falls by 20%, first try to reduce your expense. क्योंकि हर बड़ा इन्वेस्टर, हर बड़ा सेवर एक ही सिंपल बात बोलता है that your saving is income minus expense. को फॉर्मूला नहीं यूटिलाइज करना चाहिए. आपको करना चाहिए एक्सपेंस इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग्स. तो पहले आपको सेविंग साइड में रखना चाहिए और फिर आपको अपना एक्सपेंस डिटरमाइन करना चाहिए. So if your salary cut down by 20%, probably you need to work on your budget. You need to rework on your budget. आपको ये देखना चाहिए कि कौन से जगह से आप ज्यादा एक्सपेंस कट कर पाओगे. From your entertainment budget, your things which you can prolong. जो आप, let assume if I'm planning to buy a 10,000 rupees of shoes, I might come down to around 4-5,000 rupees of shoe. Yeah, I may buy it after 2 or 3 months. So you need to work out either to reduce your expense by 30-35% or to prolong my expense by 3-4-5 months. And that will help you to continue your SIP, to reduce your SIP much lesser than your income cut. So this was the main important thing, that you have to reduce your expense. You have to reset your monthly budget. And there is one more concept in SIP is to top up your SIP. And this top up SIP can be a new miracle. Now, what do you mean by top up SIP? Top up SIP is to increase your SIP by 5, 10, 15% every month. देखो आपकी सैलरी पर एनम बढ़ती है, मगर प्रॉब्ली हम में से बहुत सारे लोग अपनी SIPs बढ़ाना भूल जाते हैं. तो you can give a standing instruction of 5 to 10% of incremental SIP every year. And that can be a new miracle of wealth creation. Let me take an example. कि अगर आप 10,000 रुपए की मंथली SIP करते हो, तो जो पहले का जो नंबर्स है, that is a normal wealth what you will be creating. तो आप ये देखो कि over a period of 25 years, if you do a 10,000 rupees an SIP with a 15% return, your wealth will be 2 crore 75 lakh rupees. So how your top up has the lower column is your top up SIP, and how you have increased your SIPs. That in a basic SIP, the first year is 10,000, second year is third 10,000, third year is 10,000, but with the top up you are increasing it with the 10%. So अगर आपने 10,000 रुपए की SIP first year की हुई है, so from the 13th month your SIP will increase by 10%, and your 10,000 rupees SIP will become 11,000 rupees. Same way, on the 25th month it will again increase by 10%, and that 11,000 rupees SIP will increase by 1,100 rupees, and that SIP will become 12,100 rupees. And by increasing by 10% every year, the wealth में आप डिफरेंस देखो कि कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 25 years, जहां पे आप 2 crore 75 lakh rupees wealth क्रिएट करने वाले थे, with just an 10% incremental every year, the value might be 5 crore 72 lakh rupees, which is almost more than double than your normal SIP. Same way in 10 years अगर आप देखो, तो in 10 years your 10,000 rupees SIP, मतलब your savings of roughly 12 lakh rupees is 26 lakh rupees, and with 10% per annum incremental, कि आपने first year
10,000 की थी, फिर 10% से बड़ी 11,000 रुपीज की हो गई, एंड every year 10,000 rupees से आपकी SIP बढ़ती गई. On the 10th year, that instead of 26 lakh rupees, you will have roughly 37 lakh 61,000 rupees. So you need to have a standing instruction on your SIP with a top-up facility of 10% per annum or 15% per annum as per your savings capacity. You need to work on your expenses by making your budget and cash flow, and that will help you to create lot of wealth over a period of time. So a golden rule of compounding, the first and the most important goal, rule of compounding is never disturb your discipline, never disturb your simple SIP, never disturb your monthly savings, and you will create a phenomenal amount of wealth. Okay, so that is from my side. Thank you very much for your patience listening. Hopefully I have been able to give you some value in your investment journey. Okay, so any questions we'll take forward. Okay, so Kalpesh, any यस questions? यस सर फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी यहाँ पे ऑलमोस्ट इन्वेस्टर्स है ऑलमोस्ट 2700 प्लस इन्वेस्टर्स आज अपने साथ जुड़े हुए मैजिक शो देखने के लिए SIP का मैजिक और सभी लोगों ने बहुत ही मतलब अप्रिशिएट किया है कि नाइस प्रेजेंटेशंस कोई ने कहा कि हमें प्रेजेंटेशन मिल जाए तो अच्छा है तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने एडवाइजर से बात कीजिए वो गाइड करेंगे Yeah, we सर will बहुत share सारे with them. क्वेश्चन We'll share with them. सर बहुत सारे क्वेश्चन है मगर बिकॉज ऑफ टाइम मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस लूँगा जिसमें से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं तो जस्ट एक क्वेश्चन ऐसा है सर कि मान लो कि मैं 5 से 7 साल से SIP कंटिन्यू कर रहा हूँ उसका SIP वैल्यू बढ़ चुका है मतलब लेट्स एग्जांपल 1 लाख रुपीस का 2 लाख रुपया हो चुका है लेट्स एज्यूम तो उसको मैं अभी जो भी मेरा गेन है या तो फिर पूरा अमाउंट है वो अभी मार्केट जब भी हाई होगा तो उसमें लिक्विड में स्विच कर दूंगा और जब भी डाउन होगा तभी मैं मूव कर दूंगा सेम फंड में तो आपका क्या कहना है या देखो SIP का काम ही ये है कि आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करो. When you are having a discipline of investing, you do not need to time the market. You do not need to disturb it. So your role as an investor is to continue as long as possible. And जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि if my जब आप SIP करते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कल्पेश एक चीज क्या होती है कि जब आप इन्वेस्टमेंट चालू कर रहे हो और SIP चालू कर रहे हो तो आपको आपकी डेस्टिनेशन पता होनी चाहिए कि आप कौन से गोल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था माय डॉटर इज 10 years old and my first destination is my daughter's higher education, and if it is going to come after 10 years, I need not need to check what is the value in between for next 10 years. I need to just follow that discipline. That's the first thing. Second, nobody can time the market. देखो यही कोविड से पहले या जस्ट अबाउट कोविड इन 2020 March 2020 to be precise, the Sensex was nearly 40,000, and then the market corrected in the month of April to roughly 27,000. So everybody was very afraid of this unseen scenario, and the market was also corrected because of this unseen scenario. But market bounced back in just a period of 3 to 4 months, and it was more than 35,000 to 40,000 again in the period of next 3 to 4 months or in a period of 3 to 5 months. So if I could have stopped that, मैं लोअर टाइप पे अपना ज्यादा यूनिट एक्यूमुलेट करने का मौका छोड़ देता. दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकंड, मैं कौन से पीरियड में वापस इन्वेस्टमेंट करता वो मुझे नहीं पता. मैं ऐसा सोचता कि नीचे के मार्केट में निकल जाता या मार्केट करेक्ट हो रहा है तो मैं निकल जाता, तो मैं 27,000 में निकल गया एंड मार्केट बाउंस बैक हो गया तो मैं वापस इन्वेस्टमेंट 35-40 में ही कर रहा हूं. तो वो टाइमिंग किसी को नहीं पता है. एंड दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ यू शुड नेवर टाइम एंड जस्ट फॉलो द रूल ऑफ डिसिप्लिन.
करेक्ट सर, मतलब कभी भी टाइमिंग करने मत जाओ, टाइम दो, ऑटोमेटिक बन जाएगा। Yeah, the wealth is created by staying disciplined and giving time to your investment, not by timing. करेक्ट सर। जस्ट और एक ऑपरेशनल जस्ट क्वेरी है कि जो कोई भी एग्जिस्टिंग फंड है, तभी मैं वो एसआईपी में जब भी मार्केट डाउन है तो उसमें मैं लमसम या फिर एक्स वाई जेड अमाउंट आया मेरे पास तो उसमें मैं टॉपअप कर सकता हूँ कि नहीं? Yes, you can and you should. Whenever देखो mark, when you are doing an savings, when you are doing an investments, आपके पास जब भी एडिशनल पैसा आ रहा है, जब भी आपके पास एडिशनल सेविंग्स हो रही है, ओके, आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते जाइए। यू ओके, बीच बीच में जब भी आपको मौका मिले आप टॉप अप करते जाइए। यू एंड जैसे मैंने आपको एसआईपी टॉप अप के बारे में बताया, हर महीने सॉरी हर साल आप 10% से 15% के से आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दो अपनी एसआईपी बढ़ाने के लिए। और बीच में जब भी आपके पास एडिशनल सेविंग्स आ रही है, आपको बोनस आया, आपको कोई इनहेरिटेंट पैसा आया या कहीं से भी और कैश फ्लो मिला, you should deploy. The only thing you should remember while doing an long term investment or equity investment is कम से कम आपको 5 साल वो पैसा इन्वेस्ट रह सकता है कि नहीं, वो चेक करना है। इफ यू कैन इन्वेस्ट फॉर मिनिमम 5 years, every day is a good day for investment. तो जिस दिन मेरे पास पैसा आया और वो पैसा मुझे पता है कि वो मुझे अगले 5 साल तक जरूरत नहीं है, तो मैं वो डिप्लॉय कर देना चाहिए, मुझे एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। एंड सिर्फ एक ही रूल फॉलो करना है, यहां से 5 साल। करेक्ट सर। और एक दो तीन क्वेश्चन है कि जैसे कि बहुत सारे जस्ट एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि कौन से बेस्ट फंड एसआईपी में है करके, तो आप उसके देखो, बारे सिलेक्टिंग ऑफ द फंड इज नॉट अ बिग डील। मैंने जैसे बताया था कि even in the sectorial fund, where the SIP where the NAV was so volatile कि 10 की NAV 2 हो गई, 2 की NAV 7 हो गई, okay, फिर then also you have created a return of 22% per annum in that 5 years. So the important is not selection of the fund, important is to be stay disciplined. Plus for selection of the fund, you should take the help of your advisor. Your advisor are in the best position to help you to identify good funds. Plus NJ also help you to make your SIP portfolio. We have a identified we have an we have created a mechanism of creating portfolio of mutual fund, which is known as Mars SIP. So it is a portfolio which will help you to create wealth over a longer period of time by having your SIP in good consistent funds. मतलब आपका कहना है कि फंड कोई भी हो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आपका कंटिन्यूटी और गोल वो इम्पोर्टेंट है। नहीं, फंड में थोड़ा बहुत आपको मेहनत करनी है, जो आपके एडवाइजर आपके लिए हेल्प करेगा, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड, मैंने बताया कि एनजे का खुद का एक पोर्टफोलियो है which is known as Mars SIP portfolio. That is also a selection of the fund which we identify which is the good consistent fund over a longer period of time. That's the second thing. And third thing, once you do your SIPs, okay, आपको बहुत सारा फंड के बारे में नहीं सोचना है, फिर आपको सिर्फ एक ही चीज पे सोचना है, दैट इज लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन। यस करेक्ट सर। सेम बहुत अभी कोई क्वेश्चंस नहीं है, बहुत सारे लोगों ने वही कहा कि बहुत नाइस प्रेजेंटेशंस, और स्पेशली जो आपने एवरेजिंग बताया, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, और एक जो आपने कि कंटिन्यू रखने से कि खराब से खराब फंड भी होगा तो भी वहाँ पे जो आपने आईसीआईसी सेक्टर फंड का दिया, एक्सेल शीट समझाई, वो बहुत लोगों ने सराहना, बहुत लोगों को अच्छा लगा। ऑलमोस्ट एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ सर कि यहाँ पे एक पूछा गया है कि लेट्स से एग्जांपल कोई एज यहाँ पे मैटर करता है कि नहीं, मतलब लेट्स से एग्जांपल मैं 55 का हूँ तो मुझे और कंटिन्यू करना चाहिए एसआईपी कि नहीं है? जस्ट लास्ट क्वेश्चन ले लेते सर। देखो, इंडियन के ब्लड में, एवरी इंडियन के ब्लड में सेविंग्स की हैबिट है, ओके। आज मैं अपनी डॉटर which I informed that she is 10 years old, I try to explain her the importance of savings. तो हर महीने मैं उसको
पॉकेट मनी देता हूँ विच इज रफली 100 रुपीज, स्मॉल, सो आई जस्ट गिव अ स्मॉल अमाउंट टू मेक हर रियलाइज द वैल्यू ऑफ मनी, द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू, the concept of savings, and how to do save, how to save from that piggy bank, yeah, from that monthly petty cash जो मैं उसको देता हूँ. तो 100 रुपया मैं महीने का दे रहा हूँ. उसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि ये 100 रुपया महीने में आपको 20 रुपया 20 रुपीज पहले बचाना है. तो आप ये मत समझो कि मैंने आपको 100 रुपया दिया, आप ये समझो कि आपको 80 रुपीज ही मिला. ये दो, जैसे ही मैं उसको 100 रुपीज देता हूँ तो उसको 20 रुपीज वापस देना है मुझे, और वो 20 रुपीज मैं उसको बताता हूँ कि उसकी वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए. तो वो 20 रुपीज की एसआईपी होनी चाहिए. नाउ यस, करंटली 20 रुपीज की एसआईपी पॉसिबल नहीं है, मगर फिर भी टू मेक हर अंडरस्टैंड वो 20 रुपीज मैं अपने पास ले लेता हूँ वापस. तो 100 रुपीज देने के बाद 20 रुपया वापस लेता हूँ. तो उसको ये समझ में आ जाता है कि वो 20 रुपया पहले उसने पैसा बचाया, फिर बचा 80 रुपीज. वो 80 रुपीज में उसको अपना छोटे मोटे एक्सपेंस प्लान करने हैं जो उसको मुझे एक्सप्लेन करना है. तो सेम वे आप जब अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में कर रहे हो तो पहले अपनी एसआईपी कंटिन्यू करिए. आप जो भी आपकी एज है, आप 45 के हो तो 45 में अगेन मैंने जो एग्जांपल बताया था कि आपको कम से कम 10% मिनिमम 10% ऑफ योर मंथली सैलरी आपको एसआईपी में कंटिन्यू करनी चाहिए. तो जैसे एट द एज ऑफ 45 तो आपकी इनकम अच्छी हो रही है, 25 साल के बंदे से आपकी इनकम 45 पे ज्यादा हो रही है, तो आपको फिर भी कंटिन्यू करनी है और बढ़ानी है, क्योंकि आप रिटायर्ड 60 पे होने वाले हो. तो बढ़ाते ही जाना है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपकी बढ़ती जानी चाहिए. इवन आफ्टर द एज ऑफ 60, वंस यू आर रिटायर्ड, तो आप जो अपने महीने का एक्सपेंस प्लान करोगे तो पहले आपको अपने मंथली एसआईपी करिए. छोटा है तो छोटा अमाउंट कंटिन्यू करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो टाइम पे जो आपको कैश फ्लो आ रहा है और जो आपने अपने एडवाइजर के साथ बैठ के एसडब्ल्यूपी प्लान किया हो, तो आपको जो एसडब्ल्यूपी में से जो पैसा आएगा उसमें से 15-20% आप एसआईपी कंटिन्यू करिए, और रिमेनिंग 80% आप एसआईपी और रिमेनिंग 80% आप अपना एक्सपेंस मैनेज करिए. सो इवन एट द आफ्टर द रिटायरमेंट हम पैसा बचाते ही है. एवरी इंडियंस नो टू सेव मनी, एंड इफ यू नो टू सेव मनी योर इन्वेस्टमेंट नीड टू कंटिन्यू. करेक्ट सर. जो एक लास्ट क्वेश्चन पूछा तो उसने आपने आंसर दे ही दिया कि इससे कनेक्टेड ही क्वेश्चन था कि मैं एसआईपी कर रहा हूँ और जिस तरीके से मैं पे रेगुलर कर रहा हूँ तो अभी मुझे मंथली इनकम भी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल सकता है कि नहीं. तो मेरे ख्याल से आपने ये क्वेश्चन कंटिन्यू कर दिया कि एसडब्ल्यूपी करो. आप 55 के हो तो 5 साल 7 साल जितना भी आप एसआईपी कर सकते हो, उसके बाद में आप एसआईपी जिस तरीके से रेगुलर पे किया उसी तरीके से रेगुलर इनकम ले सकते हो, जस्ट लाइक अ पेंशन फंड करके. या जस्ट लाइक अ पेंशन, जो आप नॉर्मल पेंशन फंड से कर सकते हो, आप एसडब्ल्यूपी प्लान कर सकते हो थ्रू विद द हेल्प ऑफ योर एडवाइजर. योर एडवाइजर विल हेल्प यू मोर टू अंडरस्टैंड अबाउट एसडब्ल्यूपी, और आफ्टर रिटायरमेंट इज अ ग्रेट यूटिलिटी टू प्लान योर कैश फ्लो. करेक्ट सर. अभी कोई ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस के आंसर आपने कवर कर लिए सर. कोई ही ऐसा बचा नहीं है क्वेश्चंस कि इन्वेस्टर के डाउट क्लियर ना हो. ऑलमोस्ट 2700 लोगों ने आपको सर सराहना है काफ़ी. इट इज़ वन काइंड ऑफ अ मैजिक सर कि 100 रुपया भी कंटिन्यू आदमी करता है तो वो 60 साल में, मतलब कोई 30 साल का बंदा है और उसके आदत हो कि चलो मैं 60 ईयर्स तक उसको कंटिन्यू करूँगा, जैसे आपने डॉटर का एग्जाम्पल दिया, तो वो कहाँ तक पहुँच सकता है. जैसे अपने आप में एक अपने एडवाइजर के साथ बैठो कि एक सिंपल 100 रुपया भी मैं बेटी के नाम पे पैसे पेटी कैश रखूंगा, और वो बेटी जब 60 ईयर्स की हो जाएगी ना तो उसका कितना पावर ऑफ कंपाउंडिंग हो जाए. आप अपने एडवाइजर के साथ बैठो, आप चौंक जाओगे सर. तो बहुत ही सुपर प्रेजेंटेशन रहा. बहुत सारों ने डिमांड की है कि प्रेजेंटेशन दे, तो सर आप जितने भी या विल एडवाइजर शेयर, हैं बॉम्बे या रीजन विल के शेयर. सभी से, लास्ट वर्ड मेरे एंड से थैंक्स टू ऑल इन्वेस्टर्स. सर आपको कोई लास्ट वर्ड्स देना है तो अदरवाइज वी कैन कंटिन्यू. No, thanks a lot. Thank you to all the participants, and hopefully you will discuss further with all your with your advisor, and you will start increasing your SIPs. That's the first thing. Second, do not panic.
during the time of corrections. The corrections are the opportunity to accumulate more units. Okay, you need to increase your investments at the time of corrections. And third, every year minimum 10 से 15% से आपकी SIP बढ़नी चाहिए. So that was the simple learning. So thanks a lot. Thank you very much. Thank you, Kalpesh, for your valuable support. And all of us can conclude the session for the day. Thanks, everybody. Thanks for joining, sir. Thanks. Thank you. Thank you all. Bye bye. Please take care. Thanks. Bye.